welcome to our tutorials. Today, आज हम पढ़ेंगे management of raised ICP in children. So, what do you mean by management of raised ICP in children? Increased ICP, जो हमें पता है हमारा ब्रेन एक वॉल्ट है, एक बॉक्स जैसा है, उसके अंदर ब्रेन है, ब्रेन सेल्स है, ब्लड वॉल्यूम है and CSF है. So together these three components maintain a pressure inside the vault. उसको हम ICP बोलते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर. जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर एक रेंज में होता है, like it should be a range of 5 to 15 mm of Hg in case of adult. Children में है तो it should be 3 to 7 mm of Hg. In infants it is a 1.5 to 6 mm of Hg. So whenever there is a change, whenever there is a change in this pressure or a prolonged time के लिए 20 mm of Hg range में consistently the pressure is in that range, हम बोलते हैं increased ICP. So that can cause a major problem inside the brain. क्योंकि ब्रेन के अंदर जो हमारा ब्रेन में ब्रेन सेल्स है 80% है, CSF है 10% है, ब्लड वॉल्यूम है 10% है. So together these three components constitutes 100% inside the cranium. कुछ भी चेंजेस एनी ऑफ दिस कंपोनेंट्स में हो गया तो क्या क्या आएंगे? एनी ऑफ द कंपोनेंट्स में कुछ चेंजेस आ गया तो प्रेशर इनसाइड द वॉल्ट इंक्रीज, क्योंकि एक प्रेशर मेंटेन हो रहा है. मान लो कुछ लीजन आ गया, एटियोलॉजी तो बहुत हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, और एनी लीजन्स हो सकता है, कुछ ट्यूमर आ गया, इसके कारण जो ब्रेन सेल्स इंक्रीज हो रहा है, तो बाकी जो ब्लड की वॉल्यूम मेंटेन नहीं हो रहा, उनको स्पेस नहीं है, CSF के लिए स्पेस नहीं है, तो जो वो बाकी चीजों को ये पुश करेंगे, वो पुश के लिए हम बोलते हैं हेर्निएशन होंगे. तो वो एक कॉम्प्लिकेशन है, इंक्रीज आईसी में एक कॉम्प्लिकेशन है हेर्निएशन. They will try to maintain the pressure by compensating any of the by compromising or any CSF drain होके, otherwise blood volume drain होके, कैसे भी करके एक लेवल तक वो कोशिश करेंगे वो प्रेशर मेंटेन होने के लिए. जब वो प्रेशर वो लिमिट के बाहर हो जाता है then it will be very difficult. देखो ये है इंट्राक्रेनियल फिजियोलॉजी. The total volume within the skull remains constant and it is determined by the sum of the brain tissue compartments 80% blood 10% CSF 10%. ये एक हाइपोथेसिस है जो दो फिजिशियन मॉन्ट्रो एंड किल्ली ने डिस्क्राइब किया है. हमारा जो ब्रेन के अंदर ये तीनों कंपोनेंट्स एक प्रेशर मेंटेन करता है बाय मेंटेनिंग देयर वॉल्यूम. Autoregulation means whenever the volume of the intracranial compartment is tightly regulated and the cerebral blood flow is kept constant by vasoconstriction or vasodilatation. Any fluctuations is maintained inside the brain, and that is called autoregulation. Then compensatory mechanism. As I said earlier, when any of the components, one or more of other components must decrease to keep an ICP constant. है ना? Whenever there is a lesion or a increased production of the CSF, it might be due to the tumor that is present or originating in the coronary plexus where the CSF is produced. CSF कहाँ से प्रोड्यूस होता है? करोइड प्लेक्सस में प्रोड्यूस होता है. तो जो करोइड प्लेक्सस में ट्यूमर्स के वजह से CSF बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में होएंगे तो CSF कहीं और के लिए ड्रेन होना है. तो जब वो ड्रेन होके बाकी जो इंक्रीज प्रोडक्शन एक्यूमुलेट होने में हेल्प कर रहे, तो इसको हम कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म बोलते हैं. देन रिलेशनशिप बिटवीन इंट्राक्रेनियल वॉल्यूम एंड ICP एंड सेरेब्रल कॉम्प्लेक्स, ये हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्वेश्चन ऑफ वॉल्यूम डिफरेंशियल एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर डिफरेंशियल, दैट इज अब there is a volume that will cause a change in the pressure.
उसको हम cerebral compliance बोलता है. And there is a pressure that causes a change in the volume. उसको हम बोलता है cerebral elasticity. जो हमारा ब्रेन है, इसलिए 15 to 25% हमारा जो कार्डियक आउटपुट में कार्डियक आउटपुट 15 to 25% ब्रेन यूज करते हैं, क्योंकि ब्रेन में ब्लड वॉल्यूम एडिकेटली पहुंचाना बहुत जरूरी बात है, अदरवाइज हमारा फंक्शनिंग में अफेक्ट हो जाएगी. So cerebral blood flow varies with each. It should be a range of 50 to 70. The normal range is 50 to 70, and the minimum, if it is less than 30, then severe ischemia occurs. That is, blood does not deliver properly into the brain, and thus the nutrients or the oxygen that is necessary for the functioning and the metabolism of the brain is not happened. So mainly etiology, increased ICP, increased brain volume की वजह से होता है, increased blood volume की वजह से होता है, increased CSF volume की वजह से होता है, sometimes benign reason से होता है, benign intracranial hypertension से होता है. वॉल्यूम, हाँ, ब्रेन वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होता है? कोई लीजन्स हो सकता है, कोई इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग हो जाएंगे ब्रेन सेल्स में, तो ब्रेन एरिया से ब्रेन का टिश्यू एरिया इंक्रीज हो जाएंगे, बाकी बाकी दोनों कंपोनेंट के लिए दिक्कत हो जाएगी. And cerebral edema, as I said, especially in the case of encephalitis. Encephalitis में क्या होता है, जो अमोनिया प्रॉपरली एक्सक्रीट नहीं होंगे, तो हमारा जो ब्लड में अमोनिया का लेवल इंक्रीज होएंगे, that excess of ammonia will reaches the brain, that will also cause increased um, edema inside the brain cells, which results in the increased intracranial pressure. ब्लड वॉल्यूम की वजह से हो सकता है, क्योंकि एनी थ्रोम्बोसिस, एनी हेमरेज, एनी वैसोडाइलेशन की वजह से हाइपोक्सिया हो जाएंगे, हाइपरकैप्निया हो जाएंगे सीशर्स की वजह से. सो वो एक रीजन है. CSF वॉल्यूम, as I said, any in the flow of the CSF is obstructed due to any tumor or any production, increased production due to any tumor or impaired absorption due to subarachnoid hemorrhage, so CSF volume is increased. That eventually result in the increased ICP. So clinical features, mainly projectile vomiting will be there. There is no nausea. There is only vomiting. It will be so projectile. And the patient may be having headache, not might be, severe headache will be there. Drowsy, seizures can occur, pupillary changes can occur, and posturing changes, papillary edema, impaired eye movement, coordination problem, motor ability, posturing occurs. In posturing, there can be decerebrate first, and then the decorticate, flaccid, seizures, and late sign. There is early sign and there is late sign. जो पहले पहले सिम्टम्स आ जाता है, आईसीपी इंक्रीज हो रहे, जो पहले सिम्टम्स है, वोमिटिंग होएंगे, हेडेक होएंगे, आइस में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, विजन में प्रॉब्लम हो जाएंगे, मोटर एक्टिविटी में प्रॉब्लम होएंगी, रेस्टलेसनेस, एजिटेटेड बेबी इन्फेंट्स में तो वो सनसेट साइन विल बी देयर, सीजर्स विल बी कैन बी देयर, पेशेंट बहुत रेस्टलेस, irritable and crying will be there. And late sign में Cushing's triad. Cushing's triad तीन चीज को हम इकट्ठा बोलता है. It's a characteristics of like Cushing response means there will be increases systolic pressure. Systolic BP बहुत high है. Bradycardia will be there, and change of respiration, altered respiration, change of respiration. These three symptoms or these three features together हम Cushing's triad बोलते हैं. So ये है जो increased ICP में clinical features, clinical manifestation in an patient with increased ICP. And we discussed this. This is the decorticate posturing and decerebrate posturing. The difference between the decorticate and decerebrate is there is a flexion of the wrist and extension of the forearm. Extension will be there in the hands.
But in the case of decorticate, it is flexion. But in the case of decerebrate, it is extension. So that is the one main difference. All the other things are almost similar. History, history and physical examination. हिस्ट्री में हम कलेक्ट कर सकते हैं पेशेंट को एनी हिस्ट्री ऑफ फॉल लाइक कुछ ट्यूमर का सर्जरीज किया है और कुछ स्ट्रोक आया हुआ है कुछ सीएडी वाला पेशेंट है क्या. So all seizure patient, like all these things can be asked. You can get information from that and by history collection. Fundoscopy to detect whether the papilledema is there. CT, MRI, spinal tap, intracranial devices, intraventricular catheter. It is a golden standard. क्योंकि जो भी है एक थेरापेटिक पीक मेशर भी है क्योंकि जब इंक्रीज से CSF increased pressure, any any three components volume change can cause increased ICP. If it is due to CSF volume increase, then we can by inserting a ventricular catheter and placing or by placing the drain. CSF is drained. We can measure the CSF. We can measure the CSF IC pressure inside the vault, and also we can drain the excess CSF so that the other two components get enough space to accumulate inside the brain. Thus, a pressure is maintained. Head press. So, how we can manage increased ICP? We have to maintain the position of the patient. It is kept at an elevation of 30 degree. The head is kept at an elevation of 30 degree so that the proper drainage, proper venous return is happening. Ensure oxygenation. हमें जो पता होना चाहिए पेशेंट को ऑक्सीजनेशन प्रॉपरली मिल रहा है उनका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल नहीं बढ़ रहा और सैचुरेशन शुड भी 95 से ऊपर होना चाहिए और हाइपोटेंशन की चांसेस है तो हमें हाइपरटोनिक सलाइन देना है और वैसोप्रेसर्स लाइक नॉरएपिनेफ्रिन इज यूज्ड और एक्सेस जो ब्रेन सेल्स का एडिमा ये सब रिड्यूस करने के लिए वी हैव टू गिव. As I said earlier, positioning head midline will ensure a proper venous drainage from the brain. That will cause a decrease in the IC. Reduce the stimuli because if there is any stimuli such as loud noise, darkness, or any temperature raise, all this can cause an agitation or restlessness in the patient. That will cause an increase in the ICP. And also we have to maintain a temperature level, a low temperature level, so that the increased metabolic activity is not necessary because increase in the temperature will cause increase in the cerebral metabolic activity, vasodilatation that results in raised ICP and external ventricular drainage is inserted so that the excess CSF is drained out. We are measuring, we are draining and we are creating a space and that will cause a reduction in the ICP. Sedation, we have because that will also will help in decreasing the ICP, and we have to make sure that we are giving a short acting sedation because in between we have to assess the patient. We have to continuously in between we have to monitor the GCS of the patient because an increase in the ICP any time can cause a change in the GCS of the patient due to the complications such as herniation which we don't know. So this can happen. So we have to assess the patient if the patient is going into a dangerous situation or not. Then surgery. After maintaining the pressure inside the CS in the vault, we have to go for the definite surgery. If it is for evacuation, if it is for removal of the tumor, or whatever should be done, we have to do the definite surgery, the decompressive craniotomy. So it's a what is craniotomy? It's a surgical procedure in which a large section of the skull is removed so that the underlying dura mater is opened so that we are giving a space for the components inside the brain to relax. So there is no pressure inside because we are the boxes. There is no presence of box type because we have removed the or we have a large section of the skull is removed so that we can
reduce the ICP and thus alleviate cerebral hyperperfusion. Other management, corticosteroid to decrease the vasogenic edema, and dexamethasone is used, and anemia management, because in anemia also the blood supply is not met inside the brain, which causes an increase in the ICP. Seizure prophylaxis should be done. Antibiotics, antiviral, anti-malarial. If it is due to any any microbes or any virals, or the malaria is the reason to cause when increased, or the encephalitis, or the cerebral cells edema, it is because of any of these microorganisms. We have to deal with the microorganism. So nursing management, we have to assess, we have to monitor the respiration, the oxygenation, how the patient's pulse. We have used pulse oximeter. We can check the oxygenation. We can check the respiratory rate, vitals, and also the consciousness of the patient, GCS. All this can be assessed. We can get history, physical examination, history collection from the attender, and proper ventilation and suctioning must be maintained. Medication administration, positioning, especially maintaining a position of 30-degree elevation, head elevation, so that the venous drainage is achieved. And infection prevention. So I'm discussing a case here. Here it is a case of Vivek Kumar, of 11 years. One boy got admitted with headache and vomiting for 15 days. 15 दिन में पेशेंट को headache and vomiting हो रहा था. वाई उनका मेन कंप्लेंट्स है पाइनियल रीजन में उसको एक सॉल्ट एक लीजन थे. सो उसके वजह से हाइड्रोसेफेलस हो गया, क्योंकि वो लीजन बढ़ रहा है तो CSF भी अक्यूमुलेट हो रहा है, तो हाइड्रोसेफेलस हो रहा है, तो पेशेंट को प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग 15 दिन में, वो वोमिटिंग मेन सिम्टम है. हमने जो डिस्कस किया एज सेम, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ही वोमिटिंग हो रहा था और पेशेंट एडमिट हो गए. एडमिट के टाइम पेशेंट को विजन का भी प्रॉब्लम था, विजन ब्लाइंड हो गया था. पेशेंट मूविंग ऑल 4 limbs, dilated the pupils. That is as it is recorded एट्रोपिन के वजह से. अदरवाइज पेशेंट को विजन में भी प्रॉब्लम हो गया था, वोमिटिंग भी हो रहा था, फीवर भी है. तो उन्होंने फंडोस्कोपी किया तो उसमें पैपिलोडेमी फाइंड आउट किया. MRI में इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड पाइनियल रीजन इज सॉइल्ड विद हाइड्रोसेफेलस. तो उन्होंने जो इंक्रीज ICP है, रीजन पेशेंट को जो वोमिटिंग हो रहा है, हेडेक हो रहा है, और बाकी जो पैपिलोडेमा, ये सब चीज़ें पेशेंट को इंक्रीज ICP के वजह से हो रहा है, हमें पता लग गया. तो डॉक्टर ने उनको मैनाटोल शुरू कर दिया, जो उनका जो सेरेब्रल एडिमा डिक्रीज करने के लिए और फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड विड्रॉ करने के लिए मैनाटोल भी दिया, डायमॉक्स भी दिया. और उनका प्लान था शंट डालना, मतलब जो वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट, जो EVD थ्रू ड्रेन करने के लिए शंट डालेंगे प्रॉपरली. शंट डालने के लिए एक जगह होता है, इसको कॉक्स पॉइंट बोलता है, जो हमारा मिड लाइन से 3 सेंटीमीटर लैटरली, और ये हमारा जो फ्रंट नेजल वाला जॉइंट से 12 सेंटीमीटर पीछे पोस्टीरियर तरफ जाएंगे. उस पॉइंट को हम कॉक्स पॉइंट बोलता है. जो हमारा जो इंसर्शन, शंट का इंसर्शन हम उधर उस पॉइंट पे करेंगे, सो दैट ये इसके अंदर चले जाएंगे वेंट्रिकल्स में. तो उधर से वेंट्रिकल्स में नहीं, बाहर ही है, तो वो कॉक्स पॉइंट में जाएंगे, उधर से फिर CSF ड्रेन करेंगे. तो ये सिस्टम है, उसके थ्रू हमें ICP मेंटेन, इंट्राक्रेनियल प्रेशर मेंटेन कर पाएंगे. उसके बाद फिर डेफरेंट सर्जरी के लिए जाना है, क्योंकि इमीडिएट मैनेजमेंट ये है, तो पेशेंट को हेडेक हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, कैसे भी करके हमें वो सिम्टम्स मैनेज करना है. क्योंकि ये इंक्रीज ICP हमें मैनेज नहीं किया है तो वो टर्मिनेशन में चले जाएंगे, कंप्रेस होके जो मेजर ऑर्गन्स है ब्रेन का, जो ब्रेन स्टेम है, बोन्स है, मेडुला है, इस सब चीज में कंप्रेस करके हर्निएशन होके पेशेंट का ब्रेन डेथ हो जाएंगे. तो उससे पहले हमारा मेन मोटिव है ICP मेंटेन करना. So these are my references.